Hello dear kids, how are you? Hope you all are fit and fine at your places. Myself Neema Davi and welcome to Neema's classroom. So in this channel, you will able to see your chapters related to subject SS and science. Today, I want to teach you chapter living things and non-living things of chapter number 5. So without wasting any of the time, let's get started. Living things means the things which have life. यानी कि ऐसी चीजें जिसमें जिंदगी होती है, that is living thing. And non-living thing means जिसमें कोई जिंदगी नहीं होती. Okay, so that is non-living things. Living things, the best example of living thing is animals and plants. Animals and plants, they both are living things, right? They both have life. Rest of all the things apart from animals and plants, they are non-living things. Simple as that. Yes, प्लांट्स और एनिमल्स को छोड़ के बाकी सारी चीज़ें नॉन लिविंग थिंग्स होती है, राइट? सो लेट्स टॉक अबाउट लिविंग थिंग्स फर्स्ट. Plants and animals. You have seen so many varieties of plants and animals around you, right? आप कहीं पे भी जाते हैं, आप स्कूल जा रहे हैं, आप मार्केट जा रहे हैं, आप सिनेमा में जा रहे हैं, आप अपने नेबर के घर जा रहे हैं, कहीं पे भी जाते हैं. You see varieties of plants, right? And varieties of animal near around you. So many different kinds of plants and animals are there around you. So they both have life. That's why they both are living things. Now let's talk about non-living things. Non-living things means the things which do not have life. यानी कि ऐसी चीज़ें जिसमें ज़िंदगी नहीं होती है, वो होती है non-living things. So non-living things are of two types. First of all, natural non-living things. Natural non-living things mean the things which is provided by nature. Like air, water, soil, rocks, all these things are natural non-living things which is provided by nature. Nature ने हमको provide की है. That's why these are natural non-living things. Now let's talk about human-made non-living things. Human-made non-living things means ऐसी चीज़ें जिसे हमने खुद बनाया है. Like your bed, your chair, your table, your pencil, your eraser, your utensils, your toys, XYZ. Okay, so all these things are made. See students, living things and non-living things. If you want to differentiate between living things and non-living things, so there are some basic characteristics which will help you out to make the difference between living things and non-living things. So today we will discuss about all these characteristics. So these characteristics are: first, living things move by their own. Second, living things required air, food and water for survival. Number third, living things are made up of cell. Number four, living things grow old and develop. Number five, living things respond to change. And number six, living thing reproduce. So all these are the basic characteristics which help you out to make the difference between living things and non-living things. So let us discuss all these characteristics. Number one, लिविंग थिंग्स मूव बाय देयर ओन. यानी कि लिविंग थिंग्स जो होते हैं वो खुद से ही मूव होते हैं. सो यू नो वेरी वेल दैट प्लांट्स एंड एनिमल्स आर लिविंग थिंग, राइट? सो एनिमल्स मूव बाय देयर ओन इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर. यानी कि जो एनिमल्स होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह खुद की मदद से ही जाते हैं इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर, खाने के लिए और कहीं ना कहीं सर्वाइव करने के लिए, राइट? वेयर एज अगर हम प्लांट्स के बारे में बात करें तो प्लांट्स भी लिविंग थिंग होते तो है, बट वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा पाते. क्यों? क्योंकि प्लांट्स अपना फूड खुद बनाते हैं. दैट्स वाई प्लांट एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाते, but they are living things. Now let's talk about non-living things. Non-living things यानी कि आपका बेड, आपकी चेयर, आपका फ़ोन, आपका लैपटॉप. Yes, these are non-living things. क्या वो एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं खुद की मदद से? नहीं ना. जब तक आप उसको उठा के कहीं और ना रख दे, वो खुद की मदद से किसी और जगह पे नहीं जा सकते, राइट? सो अगर हम कंपेयर करें, लिविंग थिंग्स खुद की मदद से एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, वेयर एज नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट मूव. Now, okay, number two is living things required food, air, water for survival. Yes, of course. See, plants जो होते हैं, they make their own food with the help of photosynthesis, right? और उनको किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है? कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट एंड वाटर to make their own food, है ना? So plants, they are living things and they cannot live without all these things.
Okay, so plant also need air, water, food for survival. Number 2, animals. Animals, as we have discussed in first characteristic, that animal move from one place to another in search of food, right? एनिमल जो है उनको वाटर या एयर या फूड नहीं मिलेगा तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे. सो प्लांट्स एंड एनिमल बोथ द लिविंग थिंग्स रिक्वायर्ड एयर, वाटर and food for survival, whereas non-living things cannot require any of the thing. है ना, आप अपने लैपटॉप को खाना खिलाते हो, आप अपने फ़ोन को खाना खिलाते हो, या फिर आप अपने टॉयस को एयर प्रोवाइड करते हो, वाटर प्रोवाइड करते हो? नो ना, राइट? सो नॉन लिविंग थिंग cannot require all these things for survival. Now let's talk about third. Animals, living things are made up of cell. Yes, plants or animals, they both are made up of cell. We all are made up of cell. Millions and trillions of cell are required to make this particular body. Yes, so plants and animals, they both are made up of cell. So that's why we all are known as multicellular organism. Whereas compared to non-living things, they are not made up of cell. Okay. Now let's come to the next characteristics, that is living things grow and develop. Yes, let's take one example. When you have seen the small kid, जो न्यूबॉर्न बेबी आपने देखा होगा, न्यूबॉर्न बेबी थोड़ा सा बड़ा होता है तो किड बनता है, देन आफ्टर द किड थोड़ा और डेवलप होता है, फिर एक बॉय बनता है, देन बॉय से मैन, मैन से ओल्ड मैन, फिर डाई हो जाता है, राइट? तो वैसे ही सारे लिविंग थिंग्स जो होते हैं वो डेवलप होते हैं, ग्रो होते हैं, फिर डाई हो जाते हैं. वेयर एज नॉन लिविंग थिंग डेवलप भी नहीं होते, ग्रो भी नहीं होते, डाई भी नहीं होते. अनटिल एंड अनलेस हम उसको ब्रोक ना कर दे, हम उसको तोड़ ना दे, तब तक उनमें कुछ नहीं होता. हम बड़े भी होते हैं, हम ग्रो भी करते हैं, हम डेवलप भी करते हैं हमारे अपने आप को. लेट्स टेक वन मोर एग्जाम्पल, द एग्जाम्पल ऑफ अ प्लांट. अगर हम कोई सीड को सो करेंगे, उसमें रेगुलर वाटर पोर करेंगे, तो धीरे धीरे वो बेबी प्लांट कन्वर्ट होगा, बेबी प्लांट से वो फिर प्लांट में कन्वर्ट होगा, फिर प्लांट से वो ट्री बन जाएगा, है ना? तो इसका मतलब क्या हुआ? लिविंग थिंग्स बिकम ग्रो एंड डेवलप, दे डेवलप देयर सेल्फ. वेयर एज next characteristics is living thing respond to change. Yes, living thing respond to change. इसका मतलब क्या होता है कि आपकी सराउंडिंग्स में जो भी चीज़ें चल रही हैं आप उस पर तुरंत रिस्पॉन्ड करते हो, है ना? लेट्स टेक वन एग्जाम्पल. अगर मैं आपके पर कुछ फेंकती हूँ तो आप क्या करोगे? या तो आप अपना सर बेंड कर दोगे या फिर वहाँ से चले जाओगे, राइट? यानी कि आपने अपने सराउंडिंग्स का देख के, अपने एटमॉस्फेयर को देख के आपने उस पर रिस्पॉन्ड किया. अगर आपको गर्मी लग रही है तो आप क्या करोगे? आप फैन ऑन कर दोगे या एसी ऑन कर दोगे. क्यों ऑन करोगे? क्योंकि आपने अपनी सराउंडिंग्स को देखा, आपने अपने एटमॉस्फेयर को देखा और उसके अकॉर्डिंग आपने रिस्पॉन्ड किया, राइट? सो वी लिविंग थिंग रिस्पॉन्ड टू चेंज, है ना? नाउ लेट्स टॉक अबाउट प्लांट्स. प्लांट्स भी लिविंग थिंग होते हैं. तो कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जैसे कि टच मी नॉट प्लांट. जैसे हम उन्हें टच करते हैं वो अपनी सारी लीव्स को क्लोज कर देते हैं, राइट? सेकेंड एग्जाम्पल, सनफ्लावर प्लांट. सनफ्लावर प्लांट क्या करते हैं? जहाँ जहाँ सन का डायरेक्शन होता है वो अपना फेस उनके साइड करके वो उसके साइड ही मूव होते हैं, राइट? सो दिस टाइप ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट रिस्पॉन्ड टू change, whereas non-living thing cannot respond to change. So next is living thing reproduce. Yes, as we know that animals also reproduce and plants also reproduce, right? See, animals कैसे अपने young ones को produce करते हैं? सबसे पहले तो animals जो होते हैं, कुछ animals जैसे कि cow, humans, tiger, lion, इस टाइप के animals जो होते हैं वो अपने baby को birth दे के reproduce करते हैं, राइट? सेकेंड, कुछ एनिमल्स होते हैं जैसे हैन, फ्रॉग, कुछ बर्ड्स होते हैं जो एग ले करके अपने बेबीज़ को प्रोड्यूस करते हैं. सो इस तरीके से रिप्रोडक्शन होता है एनिमल में. ना व्हाट अबाउट प्लांट्स? प्लांट्स कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं? प्लांट्स या तो सीड्स के थ्रू या स्पोर्स के थ्रू, लीव्स के थ्रू, रूट्स के थ्रू, स्टेम के थ्रू या अपने सारे बॉडी पार्ट्स के थ्रू प्लांट्स जो है अपने बेबीज़ को प्रोड्यूस करते हैं, राइट? सो दीज आर द रिप्रोडक्शन प्रोसेस ऑफ द एनिमल्स एंड प्लांट्स. सो एनिमल्स और प्लांट्स रिप्रोड्यूस करते हैं, वेयर एज नॉन लिविंग थिंग रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं. क्या आपने देखा है आपका लैपटॉप 1 से 2 हो गया या आपका फ़ोन 1 से 2 हो गया, आपका टॉयज़ 1 से 2 हो गया? नहीं ना. सो नॉन लिविंग थिंग कैन नॉट रिप्रोड्यूस. So dear students, this chapter ends up here. If you like my channel, if you like my video, please subscribe it, like it and share it. So I will see you soon with new chapter. Thank you so much. Bye bye everyone. Take care. Have a nice day.
So dear students, this chapter ends up here. If you like my channel, if you like my video, please subscribe.